कि देखने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, if you suspend a solenoid freely, one side becomes a north pole, the other side becomes south pole. All right, so if you see, bar magnet obviously is very straightforward. This is your bar magnet, and you have a magnetic axis from right at the center. This is your magnetic. From the north pole, the lines of forces come out. Okay, so this is your north pole. Okay, we will meet again for the next class. 10 o'clock? Yes. थोड़ा गैप भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा, खाना वाना भी हो जाएगा. हाँ, ठीक है. So this is your done, right? ये हो गया आपका. And similarly, you can have closed loops on the other side also, stuff like that. ठीक है. If you see the solenoid, okay, wait, so you have this solenoid. And you pass a current through it. We have already studied. So इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है आइडेंटिकल नजर आता है. हाँ, ठीक है. So this is a, let me just see. Okay, so there is an equivalence between. So even if you pick up a solenoid and freely suspend it in the air, धागे से बांध के ना छत से टांग दो, करंट पास करो, तो वो घूम के that also aligns itself the way a compass or a bar magnet aligns with Earth's magnetic field. बिल्कुल सेम चलते हैं. अच्छा, okay. Right? The lines of forces also look identical. So, and if you keep iron filings, वो जो लोहे का बुरादा होता है, हाँ, वो भी अपने आप को जो अरेंज करेगा बिल्कुल आइडेंटिकल अरेंज करेगा. ठीक है. It just says that the solenoid behaves like this, right? And if you want to find the magnetic field of both the solenoid and a bar magnet on the axial at a far away point axis पे, मतलब the distance is very large as compared to 2L. R होता है ना distance तो axis पे. So this is your axis, right? So R is very large as compared to 2L. Then the magnetic field at the axial point for both a solenoid or a bar magnet is identical. ठीक है. Okay, so they can ask you how are they similar and all that. So just explain the current is passing through this. So each of this turn of a solenoid behaves like a circular current carrying conductor, and the current is जैसे अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसे आ रहा है. So और यहाँ पे आप देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, 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 right? So you can see each turn acts as a miniature magnet. Correct. क्योंकि because a current carrying coil also behaves like a magnet. एक side south, एक side north. ऐसी शेप बनी होती है ना ऐसे वो. बस एक ऐसे बनी होती है, ये साउथ और नॉर्थ दिखाने के लिए. ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हो गए आपके बेसिकली, राइट? सो क्यूमुलेटिवली दे बिहेव लाइक अ कंप्लीट बार मैग्नेट. छोटे छोटे मैग्नेट जो बने हुए हैं, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये दिस all these get together and they create a, so you can see the miniaturized magnets have joined together to create a bar magnet. Agreed. तो ये डायग्राम बना देना आप. और ठीक है, तो you can see that here the neutralization is happening. ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहा है.
यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, एंड में साउथ और नॉर्थ रह जाते हैं यहाँ पे. यस सर. So this is your south, this is north, south, north. Starting from south, so बीच में सारी जो जहाँ छोटे छोटे गैप हैं ये वाले, ये कैंसिल हो जाता है. और ये जो एंड के पोल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे भी पोल यहीं पे होते हैं एंड्स पे. बार मैग्नेट में पोल्स यहाँ नहीं होते, हाँ बिल्कुल. यहाँ होते हैं, राइट. तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे मिनिचराइज्ड मैग्नेट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पे छोटे छोटे नॉर्थ और साउथ है. ये सब कैंसल्ड हैं, और इसलिए आखिरी वाले जो दो बचे एट द एजेस, दैट इज व्हाट मैटर्स. ठीक है. सो यू गोइंग टू कैंसल. मैं इसको मिटा देता हूँ बीच में, और अब दोबारा से एक बार मैग्नेट में बना देता हूँ. तो ये जो कॉयल है नाउ, इट इज बिहेविंग लाइक अ साउथ नॉर्थ. इधर से मैग्नेट निकल रहा है, मैग्नेट फील्ड्स यहाँ पे आके गोल घूम के आके टर्मिनेट कर रहा है. ठीक है. कम टर्मिनेट नहीं कर रहा, पूरे लूप ही बन रहे हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स. ओके सर. So you have to write all of this. कि देखो जी, we will take a solenoid. The solenoid is made up of each circular coil contributes and behaves like a small magnet. And every small magnet has its own dipole moment, and the dipole moment gets cancelled in these regions, and therefore there is no. So only two poles therefore remain in the end. One south pole and the other north pole. Dipole moment नहीं लिखना cancellation के point of view से. Then write it as magnetic field is getting cancelled, north and south. ठीक है. So opposite fields, right? मान लो एक फील्ड आपका यूं जा रहा है, दूसरा फील्ड उसी जगह पे यूं आ रहा है, तो कैंसिलेशन ही है ना, इनवर्ड आउटवर्ड. तो ये कैंसिलेशन है फिर. ये भाई अगर नॉर्थ है, इसके बाजू में एक साउथ है दूसरे का, बीच के रीजन में कैंसिलेशन है. फिर कैंसिलेशन एक का ऐसे निकल रहा होगा बाहर नॉर्थ पोल से, यूं ऐसे जा रहा होगा, और दूसरे के अंदर आ रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए. समझ गए. Just write this English dot diagram, show the miniaturized magnets, and then say that the bar magnet and a very small, it's a solenoid is not very large, it's a very 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 millimeter जितनी होती है, छोटी छोटी होती है बहुत. Okay. अच्छा. So you can say that for very small solenoid, each turn is acting like a dipole. Every turn is acting like a south and north, right? Correct. You can say that also. So then you say that the patterns are similar, और दोनों में same pattern बना देना magnetic fields का. ठीक है. That's all. And then so pick up a solenoid like this on the left, right? Bar magnet का axis पे हमने B निकाल रखा है already है, at a long distance which is R is greater than 2L. अगर नहीं होगा तो R square minus L square whole square. वो तो अप्रोक्सीमेशन थी, तो R4 आ जाता है, कट जाता है, एंड L is very small as compared to R. उसके लिए होता है. Now pick up a solenoid like this. If you calculate a magnetic field due to this solenoid also, the way to do this is pick up the solenoid and pick up a so let me draw the figure. So this is your solenoid, okay, and let's pick up one turn, okay. And let's say the distance from the center of the solenoid is x. Generally solenoid लोहे के टुकड़े पे wrapped होती हैं. मान लो दिस आर wrapped on something जिसकी permeability है, या वैक्यूम में समझ लो हवा में ही है. ये डिस्टेंस x है, और जो थिकनेस है ये dx है. ठीक है. ठीक है. So the magnetic field due to a circular current carrying conductor, okay, will be given by mu naught n dx ia square upon 2r minus x whole square plus a square 3 by 2. So if you remember, this is the formula for a circular current carrying conductor of thickness dx
at a distance of, okay, so this is your length like a bar magnet 2L. बिल्कुल बार मैग्नेट वाली टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं. दिस इज द ए. बार मैग्नेट में तो ऐसे रेडियस कुछ नहीं होता ना, देयर इज नो रेडियस. उसमें एक्स और एल की गेम है सारी. भी एक्सेस में बता दो कितनी दूर है. तो अब अभी भी हम एक्सेस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है बाय द वे. ओके, दिस इज माई एक्सेस एंड आई एम कैलकुलेटिंग फॉर एग्जांपल हियर समवेयर हियर. दिस इज माई आर. ओके, सो ये आर आ रहा है फॉर्मूले में. एंड द डिस्टेंस ऑफ द टर्न फ्रॉम द सेंटर इज x and the length is 2L and one side is L. And this is the turn. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू द सर्कुलर एलिमेंट, ये वाला, this expression. Wait. तो अब हम सोलेनॉइड की वजह से पिछले चैप्टर में सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पे म्यू नॉट ni निकाला था हमने और बोला था इनसाइड अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि काफी डेंस होता है, काफी सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर. म्यू नॉट ni जो आता है. ठीक. अभी जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, that expression is for a circular current carrying conductor. ठीक है. 3/2 उसी में आता है. स्ट्रेट के लिए भी निकालते हैं, फिर सेंटर पे भी निकालते हैं, फिर एक्सिस पे भी निकालते हैं. जब डेरिवेशन करते हैं तो एक्सिस पे भी आता है फील्ड फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, दैट इज व्हाई लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑल्सो कि वो जब हमने डिराइव करा था, सो उसके अंदर फिगर जो होती है वो ये होती है. दिस इज योर ये मेरी फिगर है. इट्स अ सर्कुलर रिंग एंड वी आर फाइंडिंग, अब रखी जमीन पे भी है तो एक्सिस जेड एक्सिस है. हमने जो फिगर लिया ऑब्वियसली हमने सर्कल ऐसे नहीं रखा. अवर सर्कल इज लाइक दिस. और हमने इसको उल्टा करके इधर निकाल रहे हैं हम. फिर हम ये वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को कैंसिल कर देते हैं. ये ए होता है, ये आर होता है, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है. और डूइंग दिस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कॉस थीटा वाले दोनों ऐड हो जाते हैं. छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, सिमेट्री से उनके वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, एक्स दोनों के जुड़ जाते हैं. डीबी जस्ट क्विक रिमाइंडर कि करा क्या था हमने तब. ओके, और उसका जब डेरिवेशन पूरा कर लेते हैं और जेड एक्सिस पे अगर आपको डिस्टेंस मालूम है जेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, देन द डेरिवेशन कि हमने डायरेक्ट लिख दिया ना सोलेनॉइड के लिए. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट? लुक एट दिस. ये आंसर आता है उसका, बी जेड. वो मैंने राइट साइड पे जेड को लिटा रखा है ऐसे, लेफ्ट साइड की फिगर में जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये वाला. दैट इज योर चॉइस कैसे आप इसको अगर यूं दिखा दे तो बी एक्स लिख देना, यहाँ पे एक्स, इसको एक्स एक्सेस लिख देना, जैसे आप रखते हो, योर चॉइस. ठीक है. इसका भी यही है कि ये दोनों साइड से जब व्हेन यू टेक दिस, दोनों साइड के कैंसिल हो जाते हैं ये वाले और ये दोनों ऐड हो जाते हैं. ठीक है. ठीक है. तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, राइट? वी हैव रिटन द रेडियस स्क्वायर, वी हैव करंट, वी हैव यस सर, म्यू नॉट, वी हैव. जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि हमने ऐसे नहीं लिख दिया 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. लुक एट दिस फिगर. ओके, आर स्क्वायर इज दिस आर स्क्वायर, राइट? ये वाला, and then there is a distance z from the center. Similarly, if you notice,
ये वाला डिस्टेंस जो है ये r है. हम्म, Let me just mark r for you. r is measured from the center in bar magnet also. यहाँ मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा r जो है दैट इज ये r मैंने यहाँ लिख दिया. r is actually this. r is a distance from the center of the solenoid to the point at which you're finding. उस सोलोनॉइड का हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है. हम्म, तो उसका देखो कैसे डिस्टेंस इसने लिखा है फॉर्मूले के अंदर. राइट, गो टू दिस r माइनस एक्स, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन लिया मैंने ये तो सेंटर से ऑलरेडी x आगे जा चुका है ना. आगे जा चुका है. तो बाकी जो बैलेंस डिस्टेंस बचा इसका इसकी वजह से दैट इज r माइनस एक्स. आर माइनस. हाँ. वही सोलोनॉइड में है. इफ यू नोटिस सर्कुलर टर्न के अंदर z स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न. हम्म, फ्रॉम हेयर सेंटर ऑफ द टर्न टू द पॉइंट. इसमें भी फिर सेंटर ऑफ द टर्न से ही नापा है r माइनस एक्स. हाँ. ये टर्न यूं होगा ना यहाँ पे. हाँ. यहां से नापा है. ये r माइनस एक्स है. एनी डाउट्स नहीं समझ में आया फील फ्री टू आस्क. एंड देन रेडियस स्क्वायर. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. कहां से उठा के ले आया अचानक ये हाँ, ठीक है. रेडियस स्क्वायर. रेडियस स्क्वायर है अपने पास. हम्म, एनी डाउट? नहीं, ठीक है. ठीक है. अच्छा, Yes, sir. इसके अंदर इफ यू नोटिस इट्स अ सिंगल टर्न. हम्म, सो देयर इज नो n इन दिस इफ यू नोटिस. यस सर. इसके अंदर इफ यू नोटिस द थिकनेस इज dx. हम्म, तो लेट्स से दिस कंटेन्स a certain number of turns, thickness dx, right? So one unit of thickness contains and n unit will contain n into dx number of turns. So the only extra quantity you see is this. बाकी सब कुछ अलग है. So n dx actually if you see n is the number of turns in 1 unit length. हम्म, मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरे पास अगर 1 मीटर होता तो मेरे टर्न्स इतने उसके अंदर आते. बिल्कुल. लेकिन मेरे पास तो इतने सा ही है ना सिर्फ. हम्म, मैं तो ये इसके टर्न्स लूंगा ना जो इतने में से ही आ गए dx में. यस सर. मेरे को मालूम है कि मेरे टर्न्स 1 मीटर में इतने हैं तो dx में कितने होंगे. हम्म, तो उन टर्न्स की वजह से मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एट द सेंटर्स. अंडरस्टूड. I can add them directly because all of them are approximately at the same distance from the center. ठीक They है. behave like only one. सब कुछ कॉमन है. तो हो सकता है 20 टर्न हो, हमें मालूम नहीं है. बट दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे आर हैविंग एवरीथिंग आइडेंटिकल. द डिस्टेंस जिस जगह पे हम निकाल रहे हैं पॉइंट P पे, मान लो ये पॉइंट P है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो सबका सेम ही है. सबको ऐड कर दिया फिर. करेक्ट. So mu understood where is the source of dB coming from? Clear है? Now let's Yeah. integrate because we have to worry about all the terms contributing on the सारे solenoid. करने पड़ेंगे. हाँ. Let's integrate. Now if you don't know integration, फिर पड़ा. you can't do this. Hmm. That is why integration becomes important for physics also. यस सर. ये वो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला 3/2 है. डिराइव करने की इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द आंसर. ओके, सो वी कैन डेफिनेटली डू इंटीग्रेशन इफ यू वांट टू, बट व्हाट कम्स फ्रॉम दिस इज दिस. आपका आई ए स्क्वायर बाहर चला गया, यस सर. म्यू नॉट भी बाहर चला गया. एक्स डी एक्स अपॉन आर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर 3/2. इसको इस वाले को r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें r माइनस एक्स को z डाल दो. पुट r माइनस एक्स इज इक्वल टू z, सो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड. यस सर. सो x इज इक्वल टू r प्लस z, r माइनस z. dx इज इक्वल टू माइनस डी जेड. दिस इज z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर raised to power 3/2. Now put z square plus a square is equal to t. हाँ हो जाएगा. फिर ये dz आ जाएगा और एक r भी अलग आ जाएगा. वो अलग बन जाएगा 1/√z
z square plus a square 3/2 r dz, और एक बन जाएगा माइनस z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ये इजी है, 2z, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। Yes, इसमें यू विल हैव टू पुट इन लॉट ऑफ लेबर बाय सेइंग z इज इक्वल टू a tan थीटा। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा dz विल बी इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, कट जाएंगे, या secant क्यूब होगा नीचे, ऊपर secant स्क्वायर होगा, नीचे secant क्यूब, क्योंकि 3/2 है ना, secant क्यूब रह जाएगा, Yes, secant थीटा ऊपर जाके cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा होगा, sin theta. तो सॉल्व हो जाता है। नो बिग डील, इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन। Correct. तो इंटीग्रेशन, लेकिन क्योंकि डेफिनेट है लेंथ तो इंडेफिनेट नहीं है, x इज वेरिंग फ्रॉम -l to l। L. ठीक है सर। So let me rewrite this. B therefore becomes equal to mu naught, जो बाहर ले सकते हैं वो तो लिख ही दिए फिक्स नंबर्स। n is the number of turns per unit length, Yes sir. 2r cube इंटीग्रल ऑफ -l to l dx ओनली। सॉल्व वॉल कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो इसने क्या करा है कि इफ यू टेक दिस एक्सप्रेशन, इतनी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट ही सेज इज दैट r माइनस एक्स अपने आप में ही काफी बड़ा है, मतलब r इज द, उसमें भी यही है बार मैग्नेट में, दैट द डिस्टेंस एट विच यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड from the center of the bar magnet is taken to be very big as compared to the length of the bar magnet. Yes sir. तो यहाँ भी यही ले लेते हैं ये, क्योंकि हमने जो शुरू करा था एक्सप्रेशन ये वाला, सॉरी b का जो हमने शुरू करा था कि b axial if you see this, इसमें कंडीशन ही यही थी if you remember. Instead of doing integration, let's make it very simple and say r is very large as compared to a. And therefore, let's reduce the expression to integral of only this dx and r और a का कंपैरिजन करा। तो इसके अंदर अगर हम r is very large as compared to, so x, remember जो सोलोनॉइड है वो बहुत छोटी होती है, तो इवन x is very small by the way। अच्छा। जब पूरी सोलोनॉइड की लेंथ जो है वो बहुत छोटी है, तो x क्या चीज है इन फ्रंट ऑफ r? मैंने r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a ले लिया, तो r इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू x। Yes sir. x क्या है, इतना सा डिस्टेंस है सोलोनॉइड के अंदर फ्रॉम द सेंटर। तो एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन देयरफॉर इट रिड्यूसेस टू r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, जीरो हो गया सब कुछ अंदर। r माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। Yes sir. तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन a इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। इसको भी हटा दिया, तो r में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो भी r ही रहता है, r के स्क्वायर के अंदर कुछ ऐड करो वो तब भी r स्क्वायर रहता है, तो ये r क्यूब ही आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग दिस इज इजी। Yes sir. Right? So this is, so we are not taking the integration approach, which means ये tan theta वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। Just take that the solenoid, the distance at which you're finding the magnetic field on the axis of the solenoid is very large as compared to x and the radius of the solenoid. ठीक है। तो b, तो ये r क्यूब आ गया, नीचे बाहर चला गया, x तो खत्म हो गया सिवाय न्यूमरेटर के, dx बचा। Yes sir. r माइनस एक्स को भी r ले लिया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी r ले लिया, वो क्यूब था, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, r क्यूब आ गया। तो म्यू नॉट n i स्क्वायर 2r क्यूब l माइनस, so this is mu naught n ia square 2r cube into 2l. Yes sir. And what is, if you remember, it's a current carrying solenoid and has south and north pole, right? The total length is L. This is a square, and current carrying
solenoid with the current I and area of cross section is A. So this is like if I multiply this by pi, this will become the A. Correct. NIA नहीं था formula magnetic moment का. So we will convert this into mu naught to m divided by 4 pi r cube. ठीक है सर. आ गया. हम्म. Magnetic field due to a solenoid. I'm just thinking because we have this n. तो ये तो ठीक है, चलो pi a square gets adjusted as area. अच्छा, what he has done is and 2l gets adjusted as a 2l and I. Sorry, 2l को तो हम छेड़ नहीं सकते, but n into l. N into L. If I rewrite this, I'm just thinking how to adjust N. N was a number of turns per unit length. So mu naught N I A square 2L upon 2R cube. Okay, how do we adjust? मैं कह रहा हूँ ये पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई ए स्क्वायर तो बनाना है ना हमने एरिया. Yes sir. पाई ए स्क्वायर इज एरिया, एरिया इनटू करंट. सो ये गया, ये गया और ये गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट बन गया m. Correct. m is equal to, and there are n. So okay, so magnetic moment therefore will be NIA, which means यही फॉर्मूला होता है ना. तो मैं n को लिख देता हूं n by l. In L length, in 2L length, the number of turns is n. So in L length, the number of turns is, in 1, the number of turns is n by 2L. This is the turn density per unit length. And this is n, right? Yes sir. तो मैं n की जगह लिख देता हूं mu naught n by 2L into I into pi a square into 2L upon 2R cube. So 2L तो ये कट गए. And this is area A and N. तो ये तीनों मिला के क्या बन गए? NIA. Yes sir. This will becomes mu naught M upon 2R cube. n हटा दिया ना मैंने. NIA में एडजस्ट कर लिया मैग्नेटिक मोमेंट को. और उसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा था? आई थिंक ऊपर द एक्सप्रेशन, सॉरी 2m आ रहा है यहाँ पे. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ रहा है. हमारा क्या आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 3. अच्छा नहीं, व्हेन वी डिड दिस मैंने पाई से मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे. ये देयर वाज नो पाई, मैंने एक्स्ट्रा बाहर से करा है. सी देयर इज नो पाई हियर. ये 2l बन जाता है. पाई था ही नहीं, तो मैंने पाई मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना चाहिए था, तो एक पाई भी ले आया मैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अनदर 2. सो दिस विल बिकम म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई. शक्ल लाने वाली बात है भाई, इसका भी तो दे. लुक एट दिस एक्सप्रेशन और टॉप पे दिस 4 पाई, ये तो कट जाते हैं ना. Yes sir. ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई मैंने भी कर दिया सेम बनाने के लिए, मेरा भी आ गया. ठीक है सर. So prove that magnetic field of a solenoid on the axis of the solenoid is equal to that of a bar magnet. Proven. ठीक है. Mathematically prove करो, physically नहीं. सेम होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये छोटे छोटे मिनिएचर मैग्नेट्स हैं, कैंसल हो रहे हैं, वो नहीं. प्रूव करके दिखाओ. ठीक है. ठीक है. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज बिकॉज आई थिंक द इंक इज डलिंग नाउ. खत्म. हाँ. और बहुत सारे व्हाइट बोर्ड बन गए हैं.
I had to pay them 2,000 rupees, which I'm not. Time Yes, नहीं sir. मिल रहा. Anyway. Okay. Now, what you have to do is explain how a bar magnet is equivalent. Same question है. अच्छा. To a current carrying solenoid. ये क्वेश्चन आएगा एक तो आ सकता है, मतलब प्रूव मैग्नेटिक फील्ड अलग से आ सकता है, डेरिवेशन दोनों को आइडेंटिकल प्रूव करो, राइट? ना इफ यू नोटिस, इफ यू टेक अ शेप ऐसे लेते हैं, एक सेकेंड है, लेट मी जस्ट टेल हिम आई हैव अ योगा क्लास टुमारो. क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक है. So let's say this is a solenoid which turns again. And all right. ठीक है, I think we don't need to do this. It's useless. जो हमने करा है ना, टर्न बना के बार मैग्नेट दिखा दिया, उसके नीचे छोटे छोटे मिनिएचराइज्ड कर दिए, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. More than enough है. All right. I think we have already done the Gauss law in magnetism. But I will just repeat it, okay? अच्छा, ठीक है. This was a shocker that came in one of the board examination. Okay. हमने एक लूप लिया था, if you remember, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइड में बना के, उसमें बोला था कि जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इट्स E is given by Q, EDS is given by Q upon epsilon naught. Yes sir, yes sir. है ना? और उसके अंदर जब हमने मैग्नेट के केस में जब हमने ये लिया था, तो हमने बोला था कि द इनकमिंग, because it's the north and south pole exist together. So if you even if you enclose it in a surface, right, a Gaussian surface, whatever is leaving is actually coming back, right? So there is no net magnetic pole being enclosed by the surface, because the poles cannot be unipoles like a positive charge and a negative charge. Cannot. It has to be a dipole. And both are reverse. It is like exactly like this. Yes, if you sir. have a dipole inside a Gaussian surface, what is the flux? Zero. Zero होगा. EDS is equal to phi is equal to Q minus Q upon epsilon naught is equal to 0. Correct. Gaussian law in magnetism actually also tells you one more thing. And when you actually do this also, you find the flux is coming out to be 0. What it tells you is that it goes to prove is that magnet is always existing in the form of a dipole. You cannot have a monopole in magnets. Not possible. It has to be a dipole. तभी तो फ्लक्स 0 आएगा. अगर मैं चार्ज अगर डाइपोल में होते जो नहीं होते, तो यहाँ पे भी नेट flux cutting across the surface would be 0, because whatever flux is coming is coming back, is leaving is equal to coming back. So no net flux enclosed. तो आप बोल देते हैं कि charges also always exist in the form of dipoles. But north pole और south pole में जब आप ये बात notice करते हो कि the magnetic field is coming out to be 0, you can clearly say that the Gauss law of magnetism clearly tells you that there are no if you do a surface integral of magnetic field over a closed surface, EDS जो होता था,
हम्म EDS, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस सर। हम इसकी इंग्लिश बोलते थे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर a closed surface, Gaussian surface. This is the language used. Correct. ये जो होता है इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। हाँ करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इक्विवेलेंस से बनाने की कोशिश करोगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी BDS इज 0 ऑलवेज। ठीक है। तो लोगों ने बोला क्यों हो रहा है ये, वाई BDS इज कमिंग आउट टू बी 0? दैट इज बिकॉज द magnet exists as a dipole. करेक्ट। ठीक है। ठीक है ना? So the surface integral of a magnetic field over a surface gives the magnetic flux through the surface. पहले सुन लो, if you do this integral which I've written BDS, if I do this integral, it is expected to give me the magnetic flux through that surface जिसके ऊपर आपने सरफेस इंटीग्रेशन करी है। अच्छा। लॉजिकली तो देना चाहिए फ्लक्स, जैसे इसके अंदर दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस सर। लेकिन वो फ्लक्स आता नहीं है, इट कम्स आउट टू बी 0। ओके। सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? तो क्या नतीजा निकला जब भी आपने ये सरफेस इंटीग्रल करा for a magnetic field over a surface? You found my magnetic flux is always coming out to be 0. What it tells you is that the poles together. सर आपकी आवाज Therefore, the number of field lines which are entering is equal to the number of field lines which are leaving. भाई अगर आप इसमें देखो, if you have just plus Q, then you have field lines which are leaving only, ना? यस सर। So you do get a flux cutting through the Gaussian surface. What if I keep a minus Q here? Now the field lines are entering also same charge रख दिया। 50 लाइन छोड़ रही है, 50 लाइन अंदर आ रही है। What is the net flux enclosed? 0 होगा। Nothing. But ये होता तो नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, unless जबरदस्ती आप डाइपोल बना लो। If you make a dipole, you will get this. But charges can exist separately, plus and minus. Correct. So you don't get this. You can only get if you deliberately create a dipole. But in the case of magnet, you always get it 0, which means you cannot have north pole as a free pole, south pole as a free pole. They will always be a magnetic dipoles. Understood. So it also goes to show that it seems ये तभी possible है कि यार जो मैग्नेटिक, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई उतनी अंदर आ गई। तो यार ये तो तभी पॉसिबल है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड नेवर टर्मिनेट्स। मतलब वही वाली लाइन वापस घूम के ही आती है। इससे ये भी तो प्रूव हो गया। हाँ हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने तो पहले बोला था जितनी फील्ड लाइंस जाती हैं उतनी वापस आती हैं। तो लोगों ने बोला वापस का क्या मतलब, कहां से, वेयर? सो द सेम फील्ड लाइन comes back. So that means unlike electric field where the magnetic field lines terminate, here they form a continuous closed loop, and therefore whatever is entering is coming back. So it proves that magnetic field has a different nature. It creates continuous loop, whereas electric field is not able to create continuous loop. It terminates, end हो जाता है जाके उस प्लस से शुरू होता है, माइनस पे एंड हो जाता है। Any doubts in your mind? Tough question they can ask you in board. Explain the Gauss law in magnetism. How is it different from Gauss law of electrostatics? What are the implications of Gauss law? क्या बताता है आपको? Poles cannot exist in isolation. Magnetic flux lines are continuous. ये भी बता दिया उसने। Yes sir. ठीक है। Clear? Tell us two differences between magnetic fields and electric fields with the help of Gauss law. With the help of Gauss law. लिखोगे पहले BDS is equal to 0. EDS is equal to Q. यहाँ पे फ्री चार्ज हो सकता है प्लस, माइनस चार्ज फ्री हो सकता है अकेला,
लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। देखो 0 आ रहा है आंसर। ये तो यहाँ पे टर्मिनेशन होती है, यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होती। ठीक है। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, यू हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो मेमोराइज। ओके सर। लिखना पड़ेगा इसको हाथ से, हम्म देन यू विल गेट इट। सेंस समझ में आ गया? जो मैंने बोल दिया वही लिखना भी है। हम्म जस्ट गिव मी 1 minute। ओके सर। I just finished a class. We had gone to Gurgaon. अच्छा ओके। Just give me 1 second. I'll just get a glass of water. हाँ श्योर। All right, I'm back. ओके सर। Hava and pani यस सर। both are required. हम्म All right. So what we do is now we start the last part of this chapter, not the last, second last actually, which is the Earth's magnetism. Okay.
Okay, so let me just draw a. Let's get first acquainted with the terminology. ठीक We don't need to learn that philosophy, how the earth magnetism was discovered. Niddle टांगी थी वो हिल रही थी, हो गया discovery. ठीक है Okay, this. And so this is bar magnet-like structure. And so let's draw this line cutting the earth like this. This is your Earth's magnetic equator. If you remember, जो line joining poles होती है, that is the axis. हाँ Okay, the magnetic axis. So therefore, what is perpendicular is this magnetic axis हो गया ये, और this is your the line passing through the yes. Earth's. This is your. Sorry, I have written it as axis. It's actually equator. Bar magnet का equator है ना ये. इक्वेटर होगा That's your south pole on the right ऊपर. And so इसमें field is, this is your magnetic south pole, and this is your magnetic north pole. This is magnetic equator. And और क्या क्या हो गया, नॉर्थ पोल पता चल गया, वो पता चल गया. Okay, whatever side is the magnetic south pole is the geographic north pole. ठीक है जी. So this is all, this is the geographic. ये नॉर्थ अमेरिका में मतलब मैग्नेटिक साउथ है. And this is your geographic south. ठीक है And if you talk about the lines of forces, तो नो मैग्नेटिक साउथ में तो एंट्री होती है लाइंस ऑफ फोर्सेस की. So magnetic south में lines of forces are entering, and in magnetic north it is leaving. Okay. So so Earth is rotating around this, ये जो बीच में line बनी हुई है, this is the geographic axis. yes sir Magnetic axis भी है. तो rotation of Earth happens around this point. और जो Earth की अपने spinning होती है ना अपनी, सूरज के अराउंड तो ऐसे ऐसे घूमता है, बट अपने एक्सिस पे भी अर्थ घूमती है. ठीक है तो ज्योग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस, तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस तो एक ही जगह पे हो गए. सिर्फ एक है डिफरेंस कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता, उनके बीच में ना 20 डिग्री का गैप होता है. ओके, सो जो मैंने ज्योग्राफिक एक्सिस दिखाया वो एक्चुअली मैग्नेटिक एक्सिस है, क्योंकि वो बार मैग्नेट के अंदर से जा रहा है. सो आई जस्ट डू अ करेक्शन. दिस इज magnetic axis because it is passing right through the bar magnet. तो इससे थोड़ा सा दूर में I will draw a line to show slightly far away if you see. yes sir So you can see geographic axis here. And geographic axis is away from the
magnetic axis. The gap between them is around 20 degrees. So the angle between magnetic axis and geographic axis is 20 degrees. ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए सारी बातें. Okay, and if you see the magnetic equator, it's a circle. हमें तो लाइन नजर आ रही है इक्वेटर, बट ये बेसिकली उस साइड पूरा गोल सर्कमफ्रेंस है, मतलब लपेटा हुआ अर्थ को ऐसे. ठीक है. सो इट्स अ ग्रेट सर्कल on the earth perpendicular to the magnetic axis, and then there is a geographic meridian. Okay, geographic meridian is the vertical plane passing through the geographic axis. Okay, so जो भी geographic axis हमने 20 डिग्री बनाया है उसको ऐसे ऊपर से ऐसे कट इट लाइक दिस. सो दिस जो प्लेन से काट रहा हूं ना मैं उसको, अच्छा ऐसे काट रहा हूं ऊपर से, दैट प्लेन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, ठीक है. जस्ट वेट, शो यू. ये सेलर्स वगैरह बहुत लैंग्वेज यूज करते हैं. अच्छा. Sailor, you know sailor, right? Those one in merchant navy and all that. Yes, yes. समुंदर वाले, उनकी सारी भाषा ही वो मैग्नेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन की. ठीक है. Let me just. It's a very complex topic. I have tried to study this, but you have to leave it at a certain point. It goes way beyond our understanding. मतलब वहां तक चला जाएगा ये. स्टेबल नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का चेंज होता रहता है. Okay. So gets difficult. So you have to get. You have to be made aware of the magnetic meridian. How does it look like? Okay. First, you have to see the gola. Let me see if you can. जब हम पढ़ेंगे ना इसका मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑल दीज टर्म्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज बार बार अर्थ का गोला नहीं बनाते हम. अच्छा, ठीक है. Look at this. Look at the magnetic pole. Geographic pole थोड़ा सा दूर है, 20 डिग्री. Yes, sir. Now look at the compass. You don't need to write. Look at the equator, magnetic equator. ये अर्थ का रियल इक्वेटर. South pole is towards the North Americas. Magnetic north is actually towards the South pole. Geographic north, magnetic. ये जो कंपस है दिख रही है, ये कंपस. हाँ. ये जैसे जैसे you're moving from the north pole, अमेरिका से जब आ रहे हो आप, अमेरिका में बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है मैग्नेटिक कंपस, क्योंकि वहां पे साउथ पोल है ना, तो ये नॉर्थ पोल दूर हो गया उससे, देखो अवे. जैसे जैसे अमेरिका से यू आर मूविंग टुवर्ड्स एशिया, मतलब इक्वेटर पे आ रहे हो, ये नीचे की तरफ आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, और यहाँ पे राइट. यू सी दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक निडल इज टर्निंग.
turns and turns and turns. अब ये देखो, magnetic equator becomes perpendicular to the magnetic equator. But we will explain what is happening. This is called dip angle. Okay, so this is called dip angle. But ये ऐसा लगता है actually. जो मैंने figure draw करी, something very similar. Something very similar to this. ठीक है. Okay. If you get your figure right in this, that means you're able to understand the planes correctly, which is only this magnetic meridian, horizontal plane, and all that. You're done. हो जाएगा. ठीक है. Just want to show you a दो ही होते हैं इसके अंदर. So one is this dip angle that you need to study. The other is a declination. And that's all. Okay. Most people are not able to understand the power spectrum. Domain. Magnetic meridian. We don't need to do PhD in this. Oh no. Okay. Yes. Okay. This you may be able to. All right. So let's discuss this figure actually. ये सही रहेगा because this is something that you need to understand. Some more terminology. Okay. Yeah. So let's look at this. Look at this figure very carefully. Now what we're discussing is a 3D vector representation of Earth's magnetic field. So there are some of the terms that you should know about Earth's magnetic field. अच्छा. Okay, and so जो हमने अभी अर्थ को सर्कल में दिखाया था, we are going to represent the Earth's magnetic field, some elements of Earth's magnetic field. One is called as the magnetic declination. ठीक है. Okay, now how do you show? So जैसे अर्थ सर्कल में है तो देखो अब geographic north is here. Okay, and this is your geographic east. Yes, sir. Assam is side है ना? Kashmir is this side. Yes, sir. Right? So note these angles. So the angle made by the angle relative to the true north is a declination. The angle of the magnetic field with respect to true north. So if you see the true north is this, right? And this angle, ये जो नजर आ रहा है ये intensity और ये वाला एंगल ये. हाँ.
Yes, sir. right? So this angle is declination. We will go in detail. Basically, declination is the angle between the geographical meridian. आ गया ना वर्ड geographical meridian. Geographical meridian का मतलब होता है आप geographic north को लो और geographic south को लो और उसके ऊपर ऐसे ना एक बुक पास करो उसके ऊपर. अच्छा. ऐसे बुक को सीधा रख के ऐसे पास करो काटते हुए. That plane is called as a geographic meridian. Okay, so the declination angle is the angle between that plane passing through the geographic north and cutting through the earth and the magnetic meridian at that place. तो magnetic meridian क्या होता है? It is also a vertical plane which is passing through. तो मतलब दो गत्ते रख लो ऐसे. एक गत्ता geographic एक्सिस के थ्रू जाएगा, एक मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू आएगा. तो ऐसे नजर आएंगे ना दोनों. They will be at an angle of 20 degrees, right? The geographic axis and the magnetic axis are located at what distance? 20 degree. 20 degrees. ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक साउथ की बात कर रहा हूँ, जो अमेरिका की साइड है, वो कनाडा में है एट 70.5 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 96 डिग्री वेस्ट. और जो नॉर्थ पोल है वो उसके बिल्कुल डायमेट्रिकली कनाडा से अगर एक छेद करें और लाइन पास करें कनाडा से थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ जाती हुई, इट विल बी एट अ 70.5 डिग्री. जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा और लॉन्गिट्यूड आता है 84. तो मैग्नेटिक पोल्स जो हैं कनाडा से स्टार्ट होते हैं और दूसरी साइड निकलते हैं. दे आर एट 2000 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर. इस ये लाइन ज्वाइनिंग, उसी लाइन के थ्रू आपको जो वर्टिकल प्लेन बनेगा ना. सो अगर आपने कनाडा से शुरू करी लाइन और वो लाइन ऐसे बन गई आपकी, इस लाइन के ऊपर आप एक ये बना दो एक वर्टिकल प्लेन. This plane is called as the magnetic meridian. Okay. Got it? So this is magnetic meridian. And then there is a geographic meridian. उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 20 डिग्री का. 20 डिग्री. हमने देख लिया वो तो फिक्स्ड है. हमें मालूम है अर्थ का जोग्राफिक साउथ क्या मानते हैं, बिल्कुल उसको गोले के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे. लेकिन सच्चाई है कि द मैग्नेटिक पोल इफ यू नोटिस इज अवे फ्रॉम जोग्राफिक नॉर्थ. ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, जोग्राफिक नॉर्थ ही है. तो हम मैग्नेटिक साउथ को बोलते हैं इट्स अ नॉर्थ सीकिंग पोल. है साउथ लेकिन अर्थ के नॉर्थ को दिखता है. तो आप if you want to show, you can't draw this earth again and again. So the way you show this is you decide that I'm going to draw a plane like this. This is my one plane and you can say whatever plane. This is magnetic meridian of yours and the geographic meridian is shown like this and the gap between them is 20 degree. तो जो coordinate axis चुनना होता है ना अर्थ में, हर चीज के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चुनना पड़ता है. एक्स एंड वाई. किस चीज से मेजर कर रहे हो? तो व्हेन वी स्टडी मैग्नेटिज्म द मेजरमेंट्स हैपन विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. सो इफ दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन देन दिस इज योर जियोग्राफिक मेरिडियन. ठीक है. यू नीड सम रेफरेंस ना, कहां से भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन से नाप रहे हो या जियोग्राफिक मेरिडियन से नाप रहे हो? कैसे नाप रहे हो आप? तो कीप अ स्टैंड हियर एंड देन कीप फ्री स्विंगिंग this is your north pole.
and this is your साउथ पोल. जो रेड वाला पार्ट होता है ना मैग्नेटिक निडल पे, वो नॉर्थ पोल होता है उसका, मैग्नेटिक नॉर्थ. दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज साउथ मैग्नेटिक, राइट. ठीक है. तो ये जो ये वर्टिकल है, दिस इज योर वर्टिकल स्ट्रेट. आपने इसको रखा है सरफेस पे, और अब आप पूरा गोला नहीं बनाना चाहता है अर्थ का. भाई आपको दिखाना है ना कि निडल विद रिस्पेक्ट टू निडल पड़ी हुई है, लेकिन इसको आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ना दिखा के ज्योग्राफिक मरीडियन और मैग्नेटिक मरीडियन के द्वारा बनाए गए दो प्लेन्स हैं उसमें रखते हैं हम. एक्स वाई कोऑर्डिनेट आई जे के नहीं यूज होता यहाँ पे. ठीक है. तो जहां समझ गया. ज्योग्राफिक मरीडियन है उसकी एक साइड पे नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा, अच्छा. और दूसरी साइड साउथ है. साउथ अमेरिका. अब लेकिन अर्थ पे नहीं दिखा रहा ना मैं इसको प्लेन्स में दिखा रहा हूँ. ये प्लेन ही है. यस सर. समझ गया. ठीक है. यस सर. तो मतलब हम कोई रेफरेंस चाहते हैं अभी विद रिस्पेक्ट, तो हम अब जो नापेंगे, अब लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड विच इज योर मैग्नेटिक. अब अर्थ के मैग्नेट फील्ड के बारे में पढ़ना शुरू करा, उसे मेजर कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन वगैरह वगैरह पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो वन एलिमेंट जो सब पूछते हैं कि जहां पे भी आप हो, जहां पे स्टडी कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, मे बी यूर इन अफ्रीका, इंडिया, कहीं पे भी हो, व्हाट इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? This is the first question about if you have to inform one scientist that what is magnetic field in your region, you will have to tell him about your magnetic declination. Got it? Yes sir. Yeah. I think light गई है क्या? Am I audible? Yes sir, आ रही है आपकी आवाज. अच्छा. Still audible? Yes sir. अच्छा. लाइट गई थी, बट हमारी तो वो है ना इन्वर्टर. यस. तो फिर भी राउटर पे नहीं असर होगा थोड़ा सा? नहीं, मतलब राउटर पे कट ऑफ होके एकदम इमीडिएटली आ जाएगा? ओके. हमारे तो हो जाता है. हो जाता है, फिर होगा. So magnetic declination, okay. So what is magnetic declination? So it is the angle between the geographic meridian. Geographic meridian तो fixed है, जो है सो है, and the magnetic meridian. At that place. ठीक है. ये होता क्यों है? क्योंकि it is established that the geographic meridian and magnetic meridian never coincide with each other. They always are at some degrees from each other. जो मैंने 20 degrees बोला था, right? The magnetic axis makes an angle of 20 degree with the geographic axis. ठीक है. और if you want to decide what is the declination at that place, जहां भी आप हो, so what you do is you keep the compass in your hand horizontally, parallel to Earth's surface, and let it rotate in the horizontal plane. इसे हाथ में रख ली, अब घूमने दो compass को. So whatever direction it shows you, right, is the geographic north-south. Okay. So whatever angle the needle makes with the geographic north-south आपको पता होना चाहिए. और तो जहां भी निडल रुकी उसका एंगल आप ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से नाप लो. दैट विल टेल यू द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ये देख लो, ये नॉर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ. ओके, ये रहे. अब आपकी निडल घूम रही है, और वो निडल जैसे भी घूम के रुकी, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के साथ जो एंगल वो बनाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ठीक है. ठीक है सर. ओके.
ओके, लेट्स सर लेट्स बाकी रात को डिस्कस। कर लें। क्या हो गया भाई? थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कहाँ जाना है? जाना नहीं है सर, थोड़े काम कर लेते अच्छा, हैं। घर से बाहर जाना है? नहीं, घर पर ही। घर पर ही है। चलो, सी यू इन द इवनिंग देन, लेट यस इवनिंग। सर।